Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Acid soils are reclaimed by application of calcium carbonate, that is calcite, and other calcium salt like calcium hydroxide or calcium oxide is also used for reclamation of this acid soil, but in general calcium carbonate is used. But for reclamation of alkali soil, we use gypsum. Gypsum is calcium sulfate, but it is not used for reclamation of acid soil. So calcium containing salt, but not gypsum, is used for reclamation of acid soil. So what is the reason, what is the chemistry, what is the science behind this? जो हम एसिड सॉइल को रिक्लेम करते हैं उसमें कैल्शियम कंटेनिंग साल्ट डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को डालते हैं, लेकिन जिप्सम को हम नहीं डालते. जिप्सम इज CSO4, कैल्शियम सल्फेट का साल्ट है, बट इट इज नॉट यूज्ड. What is the reason that gypsum is not used while it contains the calcium? So if we look into the chemical formula of gypsum, it is CaSO4 2H2O. This is gypsum, and this gypsum is used for reclamation of alkali soil, and for acid soil calcium carbonate, that is calcite, is used for reclamation of acid soil, and this calcium ion is responsible for reclamation of acid soil. तो जो इन दोनों में ही कैल्शियम साल्ट है, लेकिन हम जिप्सम को यूज नहीं करते हैं. जिप्सम इज यूज फॉर एल्कली सॉइल, फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली सॉइल, एंड कैल्शियम कार्बोनेट फॉर एसिड सॉइल. तो क्या ऐसा कारण है कि कैल्शियम कार्बोनेट को यूज कर रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट को नहीं कर रहे हैं? तो इसको हमें समझना होगा. व्हाट इज द रीजन दैट व्हेन वी यूज दिस कैल्शियम सल्फेट, दैट इज जिप्सम 2H2O into the soil, and it is sparingly soluble, बहुत ज़्यादा soluble नहीं, धीरे धीरे soluble होता है, and then it make calcium ion plus sulfate ion. So this is the ionization of this calcium sulfate after solubilization, and this is the clay complex. Suppose this is clay complex or soil particle or soil colloid. Different ions in acidic soils are present, mainly dominated by aluminum, iron, hydrogen. Calcium is also present, magnesium is also present एसिड सॉइल में, लेकिन जो डोमिनेंस होगी वो किसकी होगी? एल्युमिनियम, आयरन, हाइड्रोजन. सो दीज आर द डोमिनेंट कैटायन एंड प्रेजेंस इज मोर. तो जो एसिड सॉइल है उसमें इनकी प्रेजेंस ज़्यादा होगी. एंड व्हेन वी ऐड सच टाइप ऑफ मटेरियल लाइक कैल्शियम सल्फेट, सपोज वी आर एडिंग कैल्शियम सल्फेट, then it will produce the calcium ion, it will produce calcium ion and this sulfate ion, and then this calcium will replace all these cation, and the reaction will be like that. Now calcium is present here, calcium will replace iron, aluminum, calcium is there, magnesium is there. So replacement of these cations, सारे का तो नहीं होगा, कुछ ही का होगा, हो सकता है कुछ एलिमेंट यहाँ पे रह जाए, but most of the this acidic cations are replaced by a calcium ion exchange complex. तो यहाँ से क्या हुआ? एल्युमिनियम रिलीज हुआ, then aluminum will make complex with this aluminum sulfate, Al2SO4 whole thrice, ferrous sulfate and सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो हाइड्रोजन आयन, जो एल्युमिनियम आयन रिलीज होगा यहाँ से, एल्युमिनियम आयन, फेरिक और फेरस और हाइड्रोजन आयन, एंड देन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्युमिनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दीज आर एसिडिक. This sulfuric acid is a strong acid, and these are the acidic salt, and then acidity will increase. तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा रिक्लेमेशन नहीं होगा, एसिडिटी मेंटेन रहेगी. सो कैल्शियम अगर हम डालते हैं कैल्शियम सल्फेट को, वी यूज द जिप्सम, नो डाउट देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ दिस एल्युमिनियम, हाइड्रोजन और फेरस और फेरिक, बट दिस acidic salt and this acid will produce in soil, and acidity is maintained, and there is further there will be increase in acidity. सॉइल की pH और नीचे जा सकती है. तो ऐसे साल्ट डालने से रिक्लेमेशन नहीं होगा, या तो एसिडिटी मेंटेन रहेगी या एसिडिटी बढ़ जाएगी. दैट्स वाई जिप्सम इज नॉट यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एसिड सॉइल. बट व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ एल्कली सॉइल? अब एल्कली सॉइल में क्या होता? अगर ये क्ले कॉम्प्लेक्स होता तो यहाँ पे सोडियम की डोमिनेंस होती, sodium ion is there, calcium is there, magnesium is there, then here formation of sodium sulfate. तो यहाँ क्या होता? यही होता, सेम प्रोसेस होता, but this sodium sulfate formation is there, and then it is leached down. So now this sodium sulfate is leached down and reclamation of alkali soil. तो वहाँ तो ये रिएक्शन होता.
in case of alkali soil, this reaction will take place and there is leaching of sodium sulfate. But when we use this calcium sulfate, that is gypsum, then the acidity is further increased. So there is no reclamation of acid soil. So gypsum is best amendment for reclamation of alkali soil, but not for acid soil. But what happen if we use this calcium carbonate? अगर हम calcium carbonate को use करते हैं तो reclamation chemistry is different, and we are using this, suppose the calcium carbonate, and this is the clay complex. Aluminum ions are present, ferrous or ferric are present, hydrogen ion is present, calcium ion is present, magnesium ion is present, but dominance of this aluminum and iron. And we are using this calcium carbonate, and calcium carbonate is not so easily soluble. ये बहुत जल्दी soluble नहीं होता, solubility is poor, and so it mix with the soil and take time for the reaction. And this calcium carbonate and water make this ionization of this calcium ion plus bicarbonate ion plus hydroxyl ion. So this is the formation of this calcium carbonate and water, calcium ion, bicarbonate ion and hydroxyl ion. Then on the exchange complex जो यहाँ था, then this aluminum is replaced by this calcium ion. So here is calcium ion, ferrous ion is also replaced, and then hydrogen also replaced. कुछ aluminum रहेगा इस पे, कुछ hydrogen भी रहेगा, but most of the acidic cations are replaced by calcium. तो यहाँ क्या है, replacement of aluminum by calcium. Then this aluminum will make the reaction with this hydroxyl ion. तो यहाँ जो hydroxyl ion available है, इसको देख सकते हैं आप, this hydroxyl, this aluminum, iron, this ferrous and hydrogen ion react with this hydroxyl ion and formation of aluminum hydroxide, ferrous hydroxide, ferric hydroxide and HOH water. So these are the formation of this compound, and this aluminum hydroxide, ferrous hydroxide, ferric hydroxides are insoluble compound. These are insoluble compound. ये water insoluble नहीं है, water तो soluble ही है. And further this ferric oxide formation and water, and then acidity is reduced because this aluminum ion is acidic cation, is neutralized. This ferrous or ferric is neutralized. This hydrogen ion is neutralized as a water. So acidity is reduced, means pH is increased. So जब हम calcium carbonate डालेंगे तो calcium ion जब इसको replace करेगा तो hydroxyl ion भी बनेंगे, और hydroxyl ion aluminum iron और hydrogen ion जो acidity create करते हैं उनके साथ ही हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, और ये हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. एंड देन फर्दर दिस bicarbonate with the reaction with the hydrogen ion make carbonic acid H2CO3 by this carbonic acid, and this carbonic acid is weak acid. It is not a strong acid. Sulfuric acid is a strong acid, but this carbonic acid is weak acid, and then further it is break down into water plus CO2. So there is no impact of this carbonic acid on soil acidity. So carbonic acid जो बनेगा, there is no impact, कोई इफेक्ट नहीं होगा, there is no effect of carbonic acid. लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा था जिप्सम डालने से वो एसिडिटी क्रिएट करता. तो दिस इज द रीजन दैट दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एसिड सॉइल because of formation of bicarbonate and hydroxyl ion, which make the bicarbonate make the water and CO2, and then this CO2 is escaped into the atmosphere, and hydroxyl ion react with this acidic acidic cation and make this insoluble hydroxide. So this is the reason that calcium carbonate is used for reclamation of acid soil. Gypsum is not used. While calcium play role both in reclamation of alkali as well as in acid soil. And we'll look into this acid soil, calcium play its role, and in alkali soil calcium play its role, but chemistry is different, science is different. So never used gypsum in acidic soil for reclamation. कभी भी acidic soil में gypsum मत डालिए, acidity और बढ़ जाएगी. उसको डालने के लिए हमें calcium carbonate यूज कर सकते हैं, इसको ही यूज करना चाहिए और properly mix करना चाहिए because solubility is less. So this is the science, this is the chemistry why calcium carbonate is used for reclamation of acid soil but not gypsum. Thank you very much.